हे गाइस वेलकम टू द चैनल। मैं हूं रोहन और आज हम देखने वाले हैं वेरिटेसियम का एक वीडियो। दिस इक्वेशन विल चेंज हाउ यू सी द वर्ल्ड। सो इसको देख लेते हैं पहला, उसके बाद मेरा रिव्यू आपको देता हूँ। ओके, हियर वी गो। What's the connection between a dripping faucet, the Mandelbrot set, a population of rabbits, thermal convection in a fluid, and the firing of neurons in your brain? It's this one simple equation. This video is sponsored by Fast Hosts, who are offering UK viewers the chance to win a trip to South by Southwest if they can answer my question at the end of this video, so stay tuned for that. Let's say you want to model a population of rabbits. If you have X rabbits this year, how many rabbits will you have next year? Well, the simplest model I can imagine is where we just multiply by some number, the growth rate R, which could be, say, 2, and this would mean the population would double every year. And the problem with that is it means the number of rabbits would grow exponentially forever. So तो पहले हम देख लेते हैं कि एक्सपोनेंशियली क्या है। तो उसने बोला कि हमें एक इक्वेशन से फाइंड आउट करना है कि रैबिट का पॉपुलेशन क्या होगा नेक्स्ट ईयर। तो उसने बोला कि लेट्स टेक रैबिट का करंट पॉपुलेशन है एक्स और मान लेते हैं कि हर साल वो डबल हो जाता है, मतलब ट्वाइस हो जाता है। जैसे कि अभी एक है तो अगले साल 2 हो जाएंगे, उसके अगले साल 4 हो जाएंगे, जो प्रीवियस ईयर का वो डबल हो जाएगा। अब इसमें दिक्कत ये है कि जैसे उसने बोला एक्सपोनेंशियली प्रॉब्लम क्या होता है कि इट विल आफ्टर अ सम पॉइंट इट विल रीच टू इनफाइनाइट, मतलब बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। सो आई डोंट नो, देखते हो क्या बोलता है। ठीक है, कंटिन्यू। I can add the term 1 minus x to represent the constraints of the environment. And here I'm imagining the population x is a percentage of the theoretical maximum. So it goes from 0 to 1. And as it approaches that maximum, then this term goes to 0. And that constrains the population. So तो अभी उसने एक ब्यूटीफुल इक्वेशन में डाला, बोला कि ग्रोथ एक्स आर है ग्रोथ रेट और पॉपुलेशन फिलहाल के लिए 2 है। लेकिन अगर हम ऐसा देखें तो एक्सपोनेंशियली वो बढ़ता जाएगा हर साल। तो ऐसे तो होता नहीं है, कुछ बीमारियाँ हो जाती है, नेचुरल ऑकरेंस हो जाते हैं, हर कोई वो रेट में नहीं ग्रो कर पाता, वेरियस रीजन है जिसकी वजह से वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ नहीं होगा, नहीं तो फिर इनफाइनाइट हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए नंबर उसने बोला कि 1 माइनस एक्स हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मान लीजिए एक्स जो है तो उसने एक कंस्टेंट डाल दिया 1 माइनस एक्स, जहाँ पर वो लिमिट करेगा उसको कि उसका जो 1 अगर एक्स मान लीजिए 0 है तो वो 1 हो जाएगा। this is the logistic map. xn plus 1 is the population next year, and xn is the population this year. And if you graph the population next year versus the population this year, you see it is just an inverted parabola. It's the simplest equation you can make that has a negative feedback loop. The bigger the population gets over here, the smaller it'll be the following year. So let's try an example. Let's say we're dealing with a particularly active group of rabbits, so R equals 2.6. And then let's pick a starting population of 40% of the maximum, so 0.4, and then times 1 minus 0.4, and we get 0.624. Okay, so the population increased in the first year. But what we're really interested in is the long-term behavior of this population. So we can put this population back into the equation. And to speed things up, you can actually type 2.6. तो बेसिकली उसने जैसे बोला है कि आर एन प्लस वन जो नेक्स्ट ईयर पॉपुलेशन होगा वो क्या होगा, बोला कि आर एक्स एन ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स एन। तो एक्स एन जो है वो करंट पॉपुलेशन है और आर जो ग्रोथ रेट है। तो अगर पॉपुलेशन रीचेज अ मैक्सिमम 1, जो पॉपुलेशन है वो रीचेज मैक्सिमम 1 माइनस एक्स मतलब 1 माइनस 1 0, तो इट विल ऑलवेज कोलैप्स डाउन। तो इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है नेचर को। नेचर में हमेशा आप एक पॉइंट का आगे नहीं जा सकते, नेचर आपको रुकेगा। वन स्पीशीज कैन नॉट ओवर रूल द वर्ल्ड, नो स्पीशीज, नो मैटर आप कितने भी बड़े हो, नेचर आपको बैलेंस में लेके आ जाएगा। सो वो चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए इक्वेशन है, होपफुली लेट्स सी। Times answer times 1 minus answer, get 0.61. So the population dropped a little. Hit it again, 0.619, 0.613, 0.617, 0.615, 0.616, 0.615. And if I keep hitting enter here, you see that the population doesn't really change. It has stabilized, which matches what we see in the wild. Populations often remain the same as long as births and deaths are balanced.
Now, I want to make a तो नेचर में आप देखेंगे जैसे उसने वो इक्वेशन से बताया कि जो टोटल नंबर ऑफ बर्थ्स है और जो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स है, अगर वो एक बैलेंस है, जैसे कि 10 पैदा हो रहे हैं और 2 मर जा रहे हैं, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी के साथ पॉपुलेशन लगभग एक मैक्सिमम रीच करेगा, उसके बाद वो बढ़ेगा नहीं आगे। लेकिन ह्यूमंस में आप ये नहीं देखते आप इंटरेस्टिंगली, क्योंकि ह्यूमंस में क्या है कि हमने मेडिसिन और ये सब ला के हमने डेथ रेट कम कर लिया है, लाइफ को एक्सटेंड कर लिया है। दैट्स द रीज़न वी आर सो मैनी। वी वेरंट सपोज टू बी सो मैनी बट वी आर। ओके, लेट्स सी। graph of this iteration. You can see here that it's reached an equilibrium value of 0.615. Now, what would happen if I changed the initial population? I'm just going to move this slider here, and what you see is the first few years change, but the equilibrium population remains the same. So we can basically ignore the initial population. So what I'm really interested in is how does this equilibrium population vary depending on R, the growth rate? Well, as you can see, if I lower the growth rate, the equilibrium population decreases. That makes sense. And in fact, if R goes below 1, well then the population drops and eventually goes extinct. So what I want to do is make another graph where on the x-axis I have R, the growth rate, and on the y. तो बेसिकली ग्राफ के थ्रू हमारा जो इक्वेशन है उसका चीज़ों को मोड़ तोड़ के कर रहा है। ऑब्वियसली बात है, ग्रोथ रेट आप बढ़ाओगे कम करोगे तो उससे इफेक्ट पड़ेगा। इनिशियल जो आपका पॉपुलेशन है वो भी आप चेंज करोगे तो आपको पता चलेगा। तो ये एक थ्योरी है कि अगर आपको सर्वाइव करना है और आपकी पॉपुलेशन को करना है तो मिनिमम नंबर ऑफ पीपल इज़ लाइक अराउंड, आई डोंट नो, एक स्पेसिफिक नंबर है, उसके नीचे अगर पॉपुलेशन ड्रॉप हो गया तो यू विल गो एक्सटेंट, यू कांट पॉपुलेट बिकॉज जेनेटिक प्रॉब्लम ये सब हो जाता है। मतलब इन शॉर्ट नेचर आपको बढ़ने नहीं देगा। उसी तरह अगर ग्रोथ रेट कम है, अगर आप एक ही बच्चा पैदा करो 2 मर रहे, तो ऑब्वियसली बात है आपका एक पॉइंट के बाद आप एक्सटेंट हो जाओगे, मतलब इट विल फॉल बिलो दैट थ्रेशोल्ड जहाँ पर आपको सर्वाइव करने के लिए चाहिए। सो बेसिकली ये फिर खिल रहा है ग्राफ के साथ। लेट्स सी। Axis, I'm plotting the equilibrium population, the population you get after many, many, many generations. Okay, for low values of R, we see the populations always go extinct, so the equilibrium value is 0. But once R hits 1, the population stabilizes onto a constant value, and the higher R is, the higher the equilibrium population. So far, so good. But now comes the weird part. Once R passes 3, the graph splits in 2. Why? What's happening? Well, no matter how many times you iterate the equation, it never settles onto a single constant value. Instead, it oscillates back and forth between 2 values. One year the population is higher, the next year lower, and then the cycle repeats. The cyclic nature of populations is observed in nature too. One year there might be more rabbits, and then fewer the next year, and more again the year after. As R continues to increase, the fork spreads apart, and then each one splits again. Now, instead of oscillating back and forth between 2 values, populations go through a 4-year cycle before repeating. Since the length of the cycle or period has doubled, these are known as period doubling bifurcations. And as R increases further, तो इसमें इक्वेशन में उसने ग्राफ के थ्रू में बताया, विजुअलाइज कराया कि अगर जो ग्रोथ रेट है इट क्रॉसेस 3, तो क्या होगा, जो हमारा ऑब्जर्वेशन है एक्स है, जो पॉपुलेशन एक्सपेक्टेड है वो अल्टरनेट आता जाएगा। एक ईयर बहुत ज़्यादा होगा, नेक्स्ट ईयर कम होगा, एक ईयर ज़्यादा होगा, और उसको और ऊपर हम बढ़ा देते 3 को लगभग 3.49, तो वो 4 इसमें ऑसिलेट होएगा, बहुत ज़्यादा कम कम ज़्यादा कम, तो 4 ईयर का साइकिल एक बन जाएगा या तो 2 ईयर का साइकिल बन जाएगा आफ्टर द ग्रोथ रेट इज 3। ठीक है, लेट्स सी मोर। तो ये प्योर ऑब्जर्वेशन है, इक्वेशन में हमने डाला, मैथमेटिकली बात की। तो जनरली क्या है कि मैथमेटिक्स जो है हम नेचर से लेके बना रहे हैं इक्वेशन, अगर हमारा स्टार्टिंग का पोस्टुलेट सही है, इज राइट, तो इक्वेशन जो हमें बताएगा वो सही होगा, नेचर से कंप्लाई होगा। इट्स नॉट दैट कि हमने कुछ नया पता लगाया, ये चीज़ नेचर में एग्जिस्ट करती है, हम इसको एक इक्वेशन फॉर्म में ला के स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, there are more period doubling bifurcations. They come faster and faster, leading to cycles of 8, 16, 32, 64, and then at R equals 3.57, chaos. The population never settles down at all. It bounces around as if at random. In fact, this equation provided one of the first methods of generating random numbers on computers. It was a way. तो अभी इसमें एक और चीज़ उन्हें बताइए कि अगर ग्रोथ रेट जो है वो 3.75 को टच कर लेता है तो नेचर में क्योस हो जाता है, मतलब देयर इज़ नो
डेफिनेशन, जैसे कि हमने 3 को क्रॉस किया तो हमें डबलिंग फैक्टर मिल गया कि ऊपर नीचे, तो एक्सपेक्टेड है कि हमें आप बोल सकते 10 साल के बाद क्या हो गया, ऊपर हो गया नीचे होगा, 2 ही वैल्यू है। लेकिन अगर आप एक ग्रोथ रेट को 3.7 का वैल्यू दे देते हो तो इट्स अनएक्सपेक्टेड। वो इतनी बार रिएट्रेशन हो जाते हैं कि वी डोंट नो कि नेक्स्ट ईयर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कितने से ऊपर जाएगा। तो ग्राफ इज टोटली रैंडम। अब रैंडम क्या है, रैंडम चीज़ें वो है जिसका पैटर्न हमें पता नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ में जो हम सोचते हैं कि रैंडम है, एक्चुअली वो रैंडम होती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके म्यूज़िक प्लेयर में आप जब रैंडम प्ले करते हो तो उसमें आपको अगर आप 5-6 घंटा सुनेंगे, आप 20 गाने वो 20 गाने रिपीट हो जाएंगे। रैंडम में जनरली हो सकता है कि एक ही गाना 50 बार बजे, दैट इज़ ऑल्सो रैंडम, वी डोंट नो। लेकिन अगर वो ट्रू रैंडम इक्वेशन आपको डाल दे उसमें, तो आपको गाना सुनने में मज़ा नहीं आएगा शफलिंग में, तो इसलिए वो शफल कहा जाता है। बहुत लोग रैंडम भी बोलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ में आप कहते हो रैंडम, बट दैट इज़ नॉट ट्रू रैंडम। सो एज लॉन्ग एज आपको पैटर्न पता नहीं है, वी कांट फाइंड एन पैटर्न मैथमेटिकली, और हमें कुछ आंसर पता नहीं चल रहा है, डोंट नो व्हाट विल कम नेक्स्ट, देन वी कैन से रैंडम। तो उसने वही चीज़ कही कि इस ग्राफ में क्योंकि हमें नहीं पता, ये इतना किया हो जाता है, वी डोंट नो द एक्सपेक्टेड पैटर्न, हम इससे रैंडम नंबर जनरेट कर पा रहे थे पहले। अभी आप उन मोस्ट प्रोबेबली वेदर स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि वेदर इज मोस्टली रैंडम, सो उससे हम लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी। To get something unpredictable from a deterministic machine. There is no pattern here, no repeating. Of course, if you did know the exact initial conditions, you could calculate the values exactly. So they are considered only pseudo-random numbers. Now you might तो जैसे उसने कहा कि इसे सूडो रैंडम कहा जाता है, क्योंकि अगर आपको इनिशियल कंडीशंस नहीं पता तो आपको पता नहीं, क्योंकि ये इतना केओस हो गया, नो वी डोंट नो। लेकिन अगर मैथमेटिक्स, क्योंकि अल्टीमेटली इक्वेशन से बना है, तो इसलिए सूडो रैंडम कहा गया कि इट कैन गिव यू द इल्यूजन ऑफ रैंडम, बट इट्स नॉट ट्रू रैंडम। अल्टीमेटली यू कैन फाइंड द इक्वेशन, सो देयर यू गो। expect the equation to be chaotic from here on out, but as r increases, order returns. There are these windows of stable periodic behavior amid the chaos. For example, at r equals 3.83, there is a stable cycle with a period of 3 years. And as r continues to increase, it splits into 6, 12, 24, and so on before returning to chaos. In fact, तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग एक और ऑब्जर्वेशन पता चला कि ग्रोथ रेट जो अगर 3.8 को क्रॉस करता है तो इट अगेन स्टेबलाइज, वो वापस 2 में रिपीट होने की कोशिश करता है, 4 में, और फिर आप उसको और बढ़ाते जाएंगे, फिर से केओस होता है। तो बेसिकली डबलिंग ट्रिपल 6 में रिपीट हो रहा है, केओस हो जाता है, फिर वापस डबलिंग ट्रिपलिंग केओस हो जाता है। this one equation contains periods of every length. 37, 51, 1052, whatever you like if you just have the right value of r. Looking at this bifurcation diagram, you may notice that it looks like a fractal. The large-scale features look to be repeated on smaller and smaller scales. And sure enough, if you zoom in, you see that it is, in fact, a fractal. Arguably the most famous fractal is the Mandelbrot set. The plot twist here is that the bifurcation diagram is actually part of the Mandelbrot set. How does that work? Well, quick recap on the Mandelbrot set. It is based on this iterated equation. So the way it works is you pick a number c, any number in the complex plane, and then start with z equals 0. And then iterate this equation over and over again. If it blows up to infinity, well then the number c is not part of the set. But if this number remains finite after unlimited iterations, well then it is part of the Mandelbrot set. So let's try, for example, c equals 1. So we've got 0 squared plus 1 equals 1, then 1 squared plus 1 equals 2, 2 squared plus 1 equals 5, 5 squared plus 1 equals 26. So pretty quickly you can see that with c equals 1, this equation is going to blow up. So the number 1 is not part of the Mandelbrot set. What if we try c equals -1? Well, then we've got 0 squared minus 1 equals -1, -1 squared minus 1 equals 0, and so we're back to 0 squared minus 1 equals -1. So we see that this function is going to keep oscillating back and forth between -1 and 0, and so it'll remain finite, and so c equals -1 is part of the Mandelbrot. तो बेसिकली जो उसने एक्सप्लेन कर दिया, मैंडलबॉट सेट जो है, एक इक्वेशन है zn plus 1 is zn square plus c। तो c को हम कोई भी एक नंबर एज्यूम करेंगे और फिर z का 0 लेके हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आइट्रेशंस लेंगे उसके। अगर वो इन्फाइनाइट बढ़ रहा है जैसे उसने बताया तो विल नॉट कंसिडर इट,
नहीं जा रहा है, फाइनाइट इक्वेशन आ गया तो नंबर आ गया तो विल कंसिडर इट. Mandelbrot set. Now, normally when you see pictures of the Mandelbrot set, it just shows you the boundary between the numbers that cause this iterated equation to remain finite and those that cause it to blow up. But it doesn't really show you how these numbers stay finite. So what we've done here is actually iterated that equation thousands of times and then plotted on the z-axis the value that that iteration actually takes. So if we look from the side, what you'll actually see is the bifurcation diagram. It is part of this Mandelbrot set. So what's really going on here? Well, what this is showing us is that all of the numbers in the main cardioid, they end up stabilizing onto a single constant value. But the numbers in this main bulb, well, they end up oscillating back and forth between two values. And in this bulb, they end up oscillating between four values. They've got a period of 4, and then 8, and then 16, 32, and so on. So basically Mandelbrot set और जो हमने इक्वेशन देखा था पहले, it's matching up, it's kind of repeating. Okay? And then you hit the chaotic part. The chaotic part of the bifurcation diagram happens out here on what's called the needle of the Mandelbrot set, where the Mandelbrot set gets really thin. And you can see this medallion here that looks like a smaller version of the entire Mandelbrot set. Well, that corresponds to the window of stability in the bifurcation plot with a period of 3. Now, the bifurcation diagram only exists on the real line because we only put real numbers into our equation. But all of these bulbs off of the main cardioid, well, they also have periodic cycles of, for example, 3 or 4 or 5. And so you see these repeated ghostly images if we look in the z-axis. Effectively, they're oscillating between these values as well. Personally, I find this extraordinarily beautiful. But if you're more practically minded, you may be asking, but does this equation actually model populations of animals? And the answer is yes, particularly in the controlled environments scientists have set up in labs. What I find even more amazing is how this one simple equation applies to a huge range of totally unrelated areas of science. The first major experimental confirmation came from a fluid dynamicist named Lib Tabors. He created a small rectangular box with mercury inside, and he used a small temperature gradient to induce convection. Just 2 counter-rotating cylinders of fluid inside his box. That's all the box was large enough for. And of course, he couldn't look in and see what the fluid was doing, so he measured the temperature using a probe in the top. And what he saw was a regular spike, a periodic spike in the temperature. That's like when the logistic equation converges on a single value. But as he increased the temperature gradient, a wobble developed on those rolling cylinders at half the original frequency. The spikes in temperature were no longer the same height. Instead, they went back and forth between 2 different heights. He had achieved period 2. And as he continued to increase the temperature, he saw period doubling again. Now he had 4 different temperatures before the cycle repeated. And then 8. This was a pretty spectacular confirmation of the theory in a beautifully crafted experiment. But this was only the beginning. Scientists have studied the response of our eyes and salamander eyes to flickering lights. And what they find is a period doubling. That once the light reaches a certain तो जैसे कि उसने कहा कि इक्वेशन का जो पीरियडिक डबलिंग है वो हमें बहुत सारी चीज़ों में दिखाया जाता है, तो इसमें सरप्राइजिंग बात नहीं है, नेचर है, सब चीज़ें इक्वल है. जैसे आप देखेंगे सर्कल में पाई हमें पता चल रहा है रैशनल नंबर 1 मिला, तो बहुत सारे इक्वेशन में पाई आपको आने लग गया क्योंकि सर्कल एक कॉमन चीज़ है. प्लस जहाँ पर सर्कल कॉमन चीज़ नहीं भी है, अगर आपको एक वो रैशनल नंबर मिल गया जो कि पाई है तो हम उसको नोटेशन पाई दे देंगे. तो अगर आप नेचर को स्टडी करते रहेंगे तो ऑब्वियसली वो चीज़ें ओवरलैप होंगी, इक्वेशन एक जगह कहीं और अप्लाई होगी, तो या इट्स पॉसिबल, हाईली पॉसिबल. तो इसमें शॉकिंग बात नहीं है, पर इट्स इंटरेस्टिंग, ऑब्वियसली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि कैसे, जैसे उसने कहा कि आई का फ्लिकरिंग टू लाइट
हमारा जो response है it correspond to that equation, which is fascinating. Okay. Rate of flickering, our eyes only respond to every other flicker. It's amazing in these papers to see the bifurcation diagram emerge, albeit a bit fuzzy because it comes from real-world data. In another study, scientists gave rabbits a drug that sent their hearts into fibrillation. I guess they felt there were too many rabbits out there. I mean, if you don't know what fibrillation is, it's where your heart beats in an incredibly irregular way and doesn't really pump any blood, so if you don't fix it, you die. But what they found was, on the path to fibrillation, they found the period doubling route to chaos. The rabbit started out with a periodic beat, and then it went into a 2 cycle, 2 beats close together, and then a 4 cycle, 4 different beats before it repeated again, and eventually aperiodic behavior. Now, what was really cool about this study was they monitored the heart in real time and used chaos theory to determine when to apply electrical shocks to the heart to return it to periodicity. And they were able to do that successfully. So they used chaos to control a heart and figure out a smarter way to deliver electric shocks to set it beating normally again. That's pretty amazing. And then there is the issue of the dripping faucet. Most of us, of course, think of dripping faucets as very regular, periodic objects. But a lot of research has gone into finding that once the flow rate increases a little bit, you get period doubling. So now the drips come 2 at a time, da-dip, da-dip, da-dip. And eventually, from a dripping faucet, you can get chaotic behavior just by adjusting the flow rate. And you think, like, what really is a faucet? Well, there's constant pressure water and a constant size aperture, and yet what you're getting is chaotic dripping. So this is a really easy chaotic system you can experiment with at home. Go open a tap just a little bit and see if you can get aperiodic dripping in your house. The bifurcation diagram pops up in... It's amazing, जैसे उसने बताया कि आप टैप के साथ खेल के पीरियोडिक उसमें जो गिरना है पानी का वो विजुअलाइज कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंट करके आपको एक chaos रैंडम सूडो रैंडम काइंड ऑफ आपको फ्लो दिखाई देगा. It's amazing, mind boggling चीज़ है. So many different places that it starts to feel spooky. Now I want to tell you something that'll make it seem even spookier. There was this physicist, Mitchell Feigenbaum, who was looking at when the bifurcations occur. He divided the width of each bifurcation section by the next one, and he found that ratio closed in on this number, 4.669, which is now called the Feigenbaum constant. The bifurcations come faster and faster, but in a ratio that approaches this fixed value. And no one knows where this constant comes from. It doesn't seem to relate to any other known physical constant. So it is itself a fundamental constant of nature. What's even crazier is that it doesn't have to be the particular form of the equation I showed you earlier. Any equation that has a single hump, if you iterate it the way that we have, so you could use xn plus 1 equals sine x, for example. If you iterate that one again and again and again, you will also see bifurcations. Not only that, but the ratio of when those bifurcations occur will have the same scaling, 4.669. Any single hump function iterated will give you that fundamental constant. So why is this? Well, it's referred to as universality, because there seems to be something fundamental and very universal about this process, this type of equation, and that constant value. In 1976, the biologist Robert May wrote a paper in Nature about this very equation. It sparked a revolution in people looking into this stuff. I mean, that paper's been cited thousands of times. And in the paper, he makes this plea that we should teach students about this simple equation because it gives you a new intuition for ways in which simple things, simple equations, can create very complex behaviors. And I still think that today we don't really teach this way.
I mean, we teach simple equations and simple outcomes because those are the easy things to do and those are the things that make sense. We're not going to throw chaos at students. But maybe we should. Maybe we should throw at least a little bit, which is why I've been so excited about chaos and I'm so excited about this equation because, how did I get to be 37 years old without hearing of the Feigenbaum constant? Ever since I read James Gleick's book, Chaos, I have wanted to make videos on this topic, and now I'm finally getting around to it, and hopefully I'm doing this topic justice because I find it incredibly fascinating, and I hope you do too. Oof, that was really amazing. Chaos theory. तो फाइबन कांस्टेंट जो मिला है, यस हमें नेचर में ऐसे कांस्टेंट मिलते हैं, जैसे मैंने उसका सर्कल का एग्जांपल दिया, ठीक है, तो आपको इक्वेशन मिल गया विच इज़ वेरी फैसिनेटिंग, और वो रिपीट होता है तो आप जैसे, लेकिन इसमें chaos theory में ये प्रॉब्लम है कि वो कांस्टेंट का रिपीट नहीं होता, लेकिन अगर आप एक हम का कोई भी इक्वेशन है आप उसको रीएडिट करके ये chaos theory बना सकते हैं, विच इज़ एन अमेजिंग थिंग. टेक्निकली इट्स नॉट रैंडम एनी मोर, बट इट्स फैसिनेटिंग हाउ सच ए थिंग इज़ हैपनिंग इन नेचर. यस, और वेरिटेसियम की बात से मैं सहमत हूँ कि यस, कॉलेजेस में, स्कूल्स में बच्चों लोग को ऐसे इक्वेशन और ऐसे सिमिलर इक्वेशन, इंटरेस्टिंग इक्वेशंस बताने चाहिए, ना कि एक सिंपल इक्वेशन स्टार्ट करने चाहिए ऑब्वियसली, पर ऐसे इक्वेशन तो है जो क्यूरियोसिटी बढ़ाते हैं और आगे चल के यू डू मैनी मोर थिंग्स. ओके, दिस वाज वेरी गुड वीडियो. ओके, आई लाइक इट वेरी मच. ओके, दैट्स इट गाइस. टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय.